So do remember what was there in the cross product. Cross product used to say that if you are multiplying two vectors, so the resultant will be perpendicular to the plane containing two vectors. Yes or no? Here you are multiplying omega and r. Omega is outside the axis. Okay. So that plane is considered. Okay. That is why V is equal to, because V will lie in this plane. दोनों plane perpendicular हो गया ना. Please pay attention. Omega दूसरे plane में lie कर रहा है. Omega is lying on the plane which is perpendicular to this plane. It is lying outside. Yes or no? Yes, sir. And that's what cross product tells us. Meta क्या बताता था? It gives the direction of the resultant, and resultant is perpendicular to the plane containing vector A and B. Suppose C is equal to A cross B. So C is perpendicular to the plane containing A and B. If this is your A and this is your B, so that's how C will be. सर एक चीज, अगर जो R है और जो B है वो हमेशा ही 90 पे होने वाला है. सर्कुलर, सिर्फ सर्कुलर. यही मैंने कल जब मैं चिल्ला रहा था तब आप क्या कर रहे थे? इन सर्कुलर. बाकी बहुत कल इतने क्वेश्चन किए तो उसमें कहीं था परपेंडिकुलर नहीं था, इसलिए हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहे थे. ओके, गॉट इट. दिस वन, ये इसका सिंपलीफाइड वर्जन है. This is the magnitude written. This formula is written in the form of magnitude. ये इसका magnitude version है, scalar version है. But the question is saying always true, हर जगह true हो. तो ये वाला हमेशा true होगा. Understood? शौकीन, अपनी, गायत्री, इकरा, मनाल, पुष्किन, yes sir, रेशमा, शर्मुखा, श्रीलिंग, सुचिता, everyone. Got it? Note it. क्लास की स्टार्टिंग में बोल रहे पहले मेरा वो डाउट क्लियर कर दो. कौन सी टॉपिक कर रहे हो? मेरा कोर्स का था, बहुत दिनों से हो रहा हो नहीं रहा मेरे से. I have told you अगर डाउट ना क्लियर हो गया है so give it to आप व्हाट्सएप किया करिए. ठीक है. शिवानी मैम को. ठीक है. डाउट्स को इकट्ठा मत करिए इसके लिए. ओके. कोर्स Done? Everyone done? Dev. Now let's talk about frequency. So, if a body is moving in this circular motion, ऐसे move कर रही है body, so obviously it will complete some turns. Suppose it completes first turn, it starts its motion from here. यहाँ से शुरू करती है, एक टर्न करती है, फिर रोटेट करती है, दो तीन ऐसे रोटेट करती जा रही है. ठीक है. तो इसके पास कोई एक टर्म जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं वो होगा. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? एक सेकंड में बॉडी ने कितने टर्न्स लिए या बॉडी ने कितने चक्कर लगा है सर्कुलर मोशन में. ठीक है, इन 1 सेकंड. यस और नो? सो सपोज बॉडी एक सेकंड में एक चक्कर लगा रही है. इन 1 सेकंड बॉडी इज कंप्लीटिंग 1 चक्कर और 1 रोटेशन. So its frequency will be 1. If it is doing 2 chakkar in 1 second, then 2. If 3 chakkars in 1 second, 3. So if n chakkars are there, so n will be the frequency. Yes or no? Yes, so sir. first of all, write down in frequency. Frequency is number of turns or rotations done by a body in 1 second. Okay. So suppose in 1 second the body is doing 1 chakkar. So its frequency will be 1. If in 1 second body is doing 2 chakkars, then its frequency will be 2. अगर body, now write down,
if body is completing f turns, in 1 second, then what will be its frequency, Kajal? If body is completing f turns in 1 second, f, yes or no? So अगर 1 second में f चक्कर्स लग रहे हैं, so its frequency will be f. ठीक है? Then what will be its angular displacement? Angular displacement कितना होगा? In case of circular motion, हम angle के form में displacement define करते हैं. थीटा? थीटा ही तो लिखा हुआ है. थीटा कितना होगा? This is theta. What will be its angular displacement? If the frequency of body is f, then what will be the angular displacement of a body? Yes, you guys. Ankit, Avni, all of you, Gayatri, Ikra, Manal, Pushkin, Reshma, Surabhi, और कौन है? So many of you, no one is answering, huh? Guess 2 pi r. 2 pi r किस लिए? हम एंगल के टर्म्स में डील कर रहे हैं. सो एक रोटेशन या एक कंप्लीट टर्न का मतलब हुआ 2 पाई. वन टर्न मींस 2 पाई. यस और नो? Yes, sir. एंड हाउ मेनी टर्न्स विल बी देयर? जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतने टर्न्स हो रहे होंगे. यस और नो? इफ इन वन टर्न एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई. 2 पाई का मतलब क्या हुआ? 360 डिग्री. 360 का मतलब क्या हुआ? तुमने यहाँ से स्टार्ट किया, रोटेट करके तुम वापस वहीं आ गए. तुम राउंड राउंड घूमने लगो अपनी जगह पे, ऐसे ऐसे ऐसे. 360 तब होगा जब तुम वापस वहीं पर आ जाओगे जहां से तुमने स्टार्ट किया है. यस और नो? ओके. अब एक टर्न में आप एंगल 360 का ले रहे हैं, तो अगर एक टर्न की बात हो रही है तो आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 360 है. ओके. अब आप कितने टर्न्स ले रहे हो वो तो फ्रीक्वेंसी से पता चलेगा कि एक सेकंड में आप कितने टर्न्स ले रहे हो. तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? अगर एक में आपकी 360 है तो जितने टर्न्स ले रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो. सो 2 पाई इनटू f. f बता रहा है नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 सेकंड. वो तो आप लोगों ने भी खुद बताया. यस और नो? कितने चक्कर ले रहा है 1 सेकंड में? सोया गेटिंग? वाओ. सो इट विल बी 2 पाई. प्लीज नोट इट. Note it, everyone. कल की क्लास देखी थी? सर वो आज अपलोड होगी. एक दिन पहले नहीं, मतलब तो तुम कैसे कर पाओगे टीम? सर मैं कर दूंगी आज, फिनिश कर दूंगी उस लेक्चर को. Done. Shocking, speak. Why are you silent? सर ये चैप्टर को बेकार लग रहा है मुझे. You see, huh? Okay, move. Let's move on. एक तो चैप्टर है. Time period. What is time period? मतलब उसने कितने टाइम में हाँ होता क्या है? फ्रीक्वेंसी. हाँ? What is time period? Very good. Time taken to complete one rotation, one turn. एक चक्कर में कितना टाइम लग रहा है? No, पुष्किन ड्यूरेशन ऑफ वर्क नहीं है वो. ड्यूरेशन ऑफ वर्क से भी अगर सोचो तो यहाँ पे वर्क क्या है? उसका रोटेट होना. So time taken to complete one rotation. Getting me, Pushkin? Okay? बोलो बोलो. Yes, कहाँ? नहीं पे. No, you were somewhere else. नहीं. Okay. So time taken to complete one rotation is known as time period, denoted by capital T. अब बताओ क्या रिलेशन होगा काजल टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में? सोच के बताओ. लॉजिकली रटा रटाया ज्ञान नहीं, क्रैमिंग नहीं. F is equals to 1 upon T.
F is equal to 1 upon T. Why? Say it, but why? सर क्योंकि Can you elaborate it? फ्रीक्वेंसी टाइम पे डिपेंड करती है, नहीं मतलब एक रोटेशन. Why F is equal to 1 upon T or why T is equal to 1 upon F? Explanation. Explain करिए ऐसा क्यों होता है? रीजन होगा, ऐसे थोड़ी ना है. हरिश्चंद्र की उपन्यास थोड़ी है. Anyone? Why time period is equal to 1 upon F? Can you? Why time period is equal to 1 upon F? अब समझ में आया आप लोगों को फिजिक्स में नंबर क्यों नहीं आते हैं? हाँ, या ठीक है. सर मतलब आपने लिखा है ना बॉडी इज कंप्लीटिंग एफ टर्न्स, तो मतलब एक टर्न अगर एक सेकंड में करा तो एफ टर्न्स 1 upon If body is completing in 1 second F chakkars, yes or no? Yes sir. या फिर इसको उल्टा करके लिख दीजिए तो आपको समझने में और आसानी होगी. That F turns are completed, F rotations are completed in 1 second. ये भी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी में किया था. So एक टर्न या एक चक्कर कितने टाइम में होगा? यही तो टाइम पीरियड होता है. So बेसिक ये नहीं बता पा रहे थे हम. So one chakkar will be completed in how much time? 1 upon F seconds. Yeah. And that's what time period is. That's what the definition says. Yes or no? That how much time will be taken to complete one rotation by a body. So this much time is taken to complete one rotation. So this is the time period. Yes or no? Okay. So time period is equal to 1 upon F. Unit इसकी seconds होगी, time है तो. Then there is a relation. Omega is equal to 2 pi F. So you can also say omega is equal to 2 pi upon T. ये तो सबको ही पता होगा. Okay. So that's it with this. बहुत आसान सी बात थी. Now coming to the today's topic. Please note it fast. Okay. Done? Yes sir. Can I proceed? Now let's talk about acceleration in circular motion. Yes, how many accelerations are there in a circular motion? Suppose there is a body which is performing a circular motion, let's say starting from this point called P. Okay, this is the center of the body of this circle, not of the body. This is the center of the circular path. So, how many accelerations will act on this body? सर पीछे में डाउन. पीछे डाउट है. Yeah. 2 सर थीटा भी 2 पाई एफ होता है और ओमेगा भी 2 पाई एफ. कैसे? मुझे ओमेगा तो समझ आ गया क्यों है 2 पाई एफ, बट फिर हम थीटा भी थीटा नहीं समझ में आया कैसे? वो भी समझ आ गया, पर दोनों का फॉर्मूला सेम क्यों है? Okay. What is omega? वेलोसिटी. What is velocity? डिस्टेंस अपॉन वो ठीक है, टाइम. वो ठीक है. वो समझ आ गया. थीटा जब हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी की बात करी थी कल, तो मैंने आपको क्या बताया था कि in case of angular velocity and angular displacement, their direction is same. If you are talking about circular motion, इनके डायरेक्शन सेम होंगे. यस और नो? दोनों बाहरी की तरफ आ रहे थे. ठीक है. और इनका मैग्नीट्यूड भी कभी-कभी सेम हो सकता है. तो अगर आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में डील कर रहे हो, नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहे हो, तो उस केस में आपका ओमेगा, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहे हो तो क्या होगा?
आप कुछ टाइम लगा रहे होंगे और आप 2 पाई की ही डिस्प्लेसमेंट कर रहे होंगे, कोई और ऑप्शन तो है नहीं। भाई आपकी डिस्प्लेसमेंट तो एंगल के टर्म्स में हो रही है, एक टर्न ले रहे हो, नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहे हो, तो एक टर्न तो कंप्लीट ही तब होगा जब 2 पाई आपने कर लिया, और यही वही आपकी डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा सर मेरा भी एक डाउट था, एक बार पीछे वाला आपने भी क्वेश्चन और पीछे हाँ वो आपने मतलब इनसे कॉन्सेप्ट हुआ है, तो हमने कल ये हमने सेम क्वेश्चन करा था जिसमें वो क्वेश्चन निकालिए जो करा था, उसमें से 2 ऑप्शन थे। हाँ तो उसमें हमने बोला था कि इसमें ये वाला एक मिनट, ये कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है किसी में? अच्छा ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में अंतर होता है ना मैडम। यहाँ पे एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर से, स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता है ना। लेकिन अगर आप इक्वेट कर रहे हैं उसको दूसरे वेक्टर से, तो इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्या इनके डायरेक्शन सेम है? तो moving on to circular motions acceleration, yeah, how many accelerations are there on P? The name of this body is P. 2. What 2? 2 name tangential and radial. radial, ये कौन से नए तरीके का आ गया? Yes, how many accelerations first of all? कितने acceleration होंगे बॉडी पे? Centripetal and tangential. चलिए, you at least pronounce the names right. There is nothing radial acceleration, Mr. Shaukin. Yes. What about you all? कितने होंगे dear? बताओ. क्या लगता है? एक उनका वो भी होगा रिजल्टेंट। Resultant भी होगा. 3 according to you 3. अब रिजल्टेंट है तो आप काउंट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। देव. सर दो ही सर होंगे दो ना। ओके, आप लोग जो भी बुक्स वगैरह पढ़ेंगे उसमें यही सब 2 और ये सब होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। Actually, whenever body is performing a circular motion, 4 accelerations act on a body. 4 accelerations act on a body whenever body is performing circular motion. जब हम लोग 11th में थे तब हम लोग को लगता था बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगेगा अंदर की तरफ, है ना। यस सर। उसके आगे हम थोड़े से बड़े हुए तो हमें लगा एक और आता है, टेंजेंशियल ही लगता है। इसके आगे हम लोग सोच ही नहीं पाते। फिर अब कहा कि भाई 2 लग रहे हैं जिनका कुछ रिजल्टेंट भी होगा, बट एक्चुअली देयर आर 4 टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। सो राइट डाउन, व्हेनेवर अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, 4 types of acceleration act on a body. Number 1, सबसे पहला तो हमारा centripetal acceleration. We will denote it by AC in our discussion. Number 2, tangential. ACC is short form for acceleration, okay? We will denote it by AT. Third is net acceleration. We will denote it by AN. And fourth is your angular acceleration. Okay, we will denote it by alpha. अल्फा। And all 4 of them will act simultaneously. वो आपने ए नेट एक्सेलरेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या था? A suffix n. एन। सर मेरा एक डाउट है, सेंट्रीपिटल में और सेंट्रीफ्यूगल में क्या मतलब? मैंने सेंट्रीपिटल बताया अभी, मैंने सेंट्रीफ्यूगल का जिक्र किया। नहीं मेरे माइंड में अच्छा, मैंने इस बात में आपको क्यों टोका जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा माइंड इतना ज़्यादा चंचल है कि हम लोग एक जगह कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर अभी बात चल रही टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की और आप पहुंच गए सेंट्रीफ्यूगल में, सेंट्रीफ्यूगल में आप चले गए, आप फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में सोच लो। फोर्स का भी जन्म ही कहाँ हुआ है? मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं दूसरे बीइंग प्रेजेंट ना तो कल आया है और जो कल जा चुका है वो हाथ में नहीं है, तो जो कुछ है वो आज ही में है, तो आज में रहिए। नहीं सिर्फ उसके साथ नहीं, हम सबके साथ है।
हम सब लोग हमेशा या तो प्लान करते हैं, ड्रीमिंग और वरिंग, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। और जो कुछ होता है वो होता अभी है, प्रेजेंट में होता है। जो कल है वो भी जब टुडे बन जाएगा तभी होएगा। तो उस पर टाइम क्यों वेस्ट करना, आज में रहिए। तो ठंड लग रही है। नो, नीट इज अ जर्नी, एक प्रोसेस है। आप नीट के बारे में होगा कि नहीं होगा, आप जैसे अभी हो तो नहीं होगा। नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, आपसे मेरा मतलब है आप सब, ठीक है। जो क्लियर करेगा वो उसमें चेंज आ गया होगा, फिर वो आप नहीं रहा। शीतल ने क्लियर किया, लेकिन जो आज शीतल है वो शीतल नहीं होगी जो क्लियर करेगी। Okay. Anyway, so these are the 4 type of acceleration. Number 1, centripetal. क्लियर तो होना ही है। थिंक अबाउट कि कितने अच्छे मार्क्स से हो, गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, एम्स लेना है, ये सोच के चलो। भाई मतलब So centripetal acceleration क्या होता है? anyone what is centripetal acceleration? हाँ हाँ प्लीज। सर लाइक अगर हम एक उसमें थ्रेड में अगर एक उसको स्टोन को बांध के ऐसे रोटेट कराते हैं तो वो जितना भी एक्सेलरेशन लग रहा होता है ऐसे सर्कुलर मोशन में, शायद वो होता है सेंटीमीटर। एक्सेलरेशन लग रहा होता है जब वो ऐसे 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 घूम रहा होता है। The acceleration which is acting towards the center of the circle. सेंटर ऑफ द सर्कल में जो लग रहा होता है तो बात अलग हो गई। आपने कहा जब रोटेट कर रहा है तब जो लग रहा है, वो कह रहा है कि अंदर की तरफ लग रहा है, तो सेंटर तो अंदर ही होगा ना, तो दोनों बात अलग हो गई। व्हाट डू यू थिंक? सेंटर की तरफ, देख नाम ही है सेंट्रीपिटल ना, तो सेंटर की तरफ। ओके, पे अटेंशन। एक क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क। सपोज देयर इज अ बॉडी, मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। ओके, दिस इज माय बॉडी, it is moving like this, its velocity is v, हर जगह velocity v है, कोई change नहीं हो रहा है velocity में। Yes, so these people are saying that acceleration is going to act, but what I have read that acceleration is equal to dv by dt, rate of change of velocity, rate means divided by time, so change in velocity with respect to time, that's what acceleration is. My dear, velocity is same, Zoya. So when velocity is same, then how acceleration is acting? सोचो, when velocity is same, how acceleration is acting? मैंने कहा v है, इस पे लगेगा acceleration? Yes or no काजल? v है velocity, circular motion है, acceleration will be there or not? Yes, sir. It is there. Velocity तो same है, कैसे लगेगा बताओ? नहीं है? हाँ आप मत बोलना। क्या? What? Yes should be what? The direction is changing constantly. My dear, acceleration is a vector quantity. हम लोगों ने जीरो वेक्टर पढ़ रखा है। जीरो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड नहीं होता था, पर फिर भी वो एक एंटिटी थी। दो चीजें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं वेक्टर में, एक डायरेक्शन होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है। We are so much accustomed that of magnitude that if something has got no magnitude, we think that that particular thing is null, but that's not the case. In case of vectors, that thing should have magnitude as well as direction, and direction is as relevant as magnitude is. Direction भी उतना ही important है जितना magnitude है। So यहाँ पे magnitude is not changing. I agree with you, but direction is changing constantly. Please see. Since direction of velocity is changing, so there is a change in velocity. Hence acceleration is developed. Okay? Got it or not? Due to change in the direction of velocity and acceleration. Yes, Manal. Anything? Okay. So due to change in the direction of velocity, acceleration is developed, and this acceleration is known as centripetal acceleration. And this centripetal acceleration is always directed towards the center of the circular path
in which body is rotating. ठीक है, ये हमेशा सेंटर की तरफ क्यों है? सेंटर की तरफ क्यों है? क्योंकि सेंट्रीपिटल है. What's your question? I didn't मतलब understand. उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ क्यों आ रही है? अंदर की तरफ क्यों आ रही है? ये हम लोग अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम है एक्सीलरेशन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोर्स. कोई फोर्स होगी जो अंदर की तरफ लग रही होगी. अभी हम लोग जब फोर्स करेंगे इसी में, तब देखेंगे ऐसा क्यों होता है. अभी हम लोग बस एक्सीलरेशन कर रहे हैं तो हमें ये मालूम है कि इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, क्योंकि जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है. यस और नो? Yes, sir. Acceleration is the byproduct of force. So write down in centripetal acceleration. This acceleration is caused due to change in direction of a velocity, not because of the magnitude. Centripetal acceleration अगर body पर है, so it is there due to change in direction of velocity. And it always acts, second point, it always acts towards the center of the circular path. चिराग समझ रहे हैं कि नहीं? आ रहा है अच्छा समझ? दिशा, निकिता, Yes, sir. प्रियंका, Yes. गौरांशी, समझ रहे हो ना? ठीक है. Yes, what is the formula for centripetal acceleration? Chirag? V square by R. Here V is linear velocity. Okay. So V is equal to what? Shaukin. V क्या होता है? The velocity. Okay. Wait a minute. Pushkin has asked something. Which point, Pushkin? First point. कौन सा फर्स्ट पॉइंट? ओके, जो फर्स्ट पॉइंट लिखवाया था, क्या लिखवाया था? Cause due to change in direction of Okay, so it is that the centripetal acceleration is caused due to change in the direction of velocity. Okay, Pushkin? Caused due to change in direction of velocity. In bracket you can also write down not due to change in magnitude. अगर magnitude change होने की वजह से, listen to me everyone. Yes, if acceleration is developed in a circular motion due to change in magnitude, it is not centripetal acceleration. अगर magnitude change हो रहा है, आप ये भी तो कह सकते थे, आप लोग कुछ कहते ही नहीं हो. V1, V2, V3, V4. तो अब इधर सोया. अब velocity का magnitude change हो रहा है. Okay. Again acceleration will be developed. भाई अब तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, सबको दिख रहा है. हाँ, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से जो एक्सीलरेशन डेवलप हो रहा है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं है. आगे चलेंगे, ठीक है. सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से आएगा, ओनली ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन. गॉट इट? व्हाट वाज दैट? या, सो v is equal to what? Shocking. R omega. Current velocity. R omega. Let's say R is the radius. So V is equal to R omega. V is applied. So R square omega square upon R gone. So R omega square is centripetal acceleration. Or omega square R. बोलो समझे कि नहीं? Got it? सर v square upon r वाला फॉर्मूला कहाँ से है? Again mv square upon r फोर्स होती है. Let the force come. अभी मैं सिर्फ आपको एक्सीलरेशन बता रहा हूँ. सारी चीजें सब कुछ डिटेल में अब तक किया है ना, तो क्यों परेशान हो रहे हो? Let the time come. I'm just introducing with acceleration to you guys. We will explore everything in detail, don't worry. Okay? आपकी पूरी सेवा होगी. I care for your money, don't worry.
Okay, done. Yes, sir. चिराग जी समझ रहे हैं? Okay. Next is tangential acceleration. Denoted by AT. So as the name suggests, tangential, acting along the tangent. What is tangent? Tangent is a line touching the circumference of a circle at a point. So this will be tangential acceleration. This will be tangential acceleration. This will be tangential. Tangential. Pay attention. That's how the velocity of body is. Linear velocity का direction भी तो यही है. Note it this way. Fluid velocity constant है. Okay, done. Write down. Tangential acceleration is there or is caused due to change in magnitude of a velocity. Tangential acceleration is caused due to change in magnitude of a velocity. Done. Question. Yeah, please. The question is, what will be the direction of tangential acceleration if velocity of the body is increasing? What I mean is, that body which is performing circular motion, velocity of that body is increasing. In that case, what will be the direction? And second case is, the body which is performing circular motion, its magnitude is decreasing, velocity is decreasing. Yeah. First one is acceleration for Positive होगा. And वो तो एक ही डायरेक्शन होगा velocity In which case? First. And in second, Chirag. Shaukin. Where is Shireen? Why is Shireen absent? Where is Shireen is missing, huh? second वाले में opposite What do you mean by opposite? velocity के opposite Sir, क्या direction. ये सही कह रही है? क्या लगता है? सब पॉइंट पे सही कौन सी point? कि वो डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा उसका अगर उसे डिक्रीजिंग पे जाएंगे तो प्रियंका, काजल, जोया, मैग्नीट्यूड अगर उसका डिक्रीज होगा जो है. हाँ नहीं सही है चेक करो velocity direction. Okay, look here. काजल कुछ समझ में आया? तो आप क्या? हाँ. जिस तरफ वेलोसिटी चाहिए उसी तरफ ये मैंने तो समझाया नहीं, तो ये लोग बोल रहे हैं इनकी बातें मत समझा करो, सिर्फ जो मैं कहूँ वो समझो.
Okay. लेकिन ये you tell me what will be the direction. Okay. Yes, you are right. Good. Very good. So Dev, Disha, Nikita. In case when velocity is increasing, direction of tangential acceleration will be along the velocity or will be in the same direction as your velocity is. Okay. And when, as shown in the first figure, same will be the direction for this case. Okay. And when your velocity is decreasing, so this is your velocity. This will be tangential acceleration opposite to the direction of velocity. अगर velocity ऐसे लगेगी, so tangential acceleration ऐसे लगेगा. Just opposite to the velocity. 180 का difference में. Got it? Yes, sir. Yes. Note it down fast. Ankit, getting it? Shocking. Yes, sir. Zoya. Manal, Gayatri, Bhavika, Avni, Pushkin, everyone clear? Sulgi, Shanmukha, Yes, sir. Pujita. Okay. When are you coming, Survi? So from next week. Next week. Okay. Everyone is waiting for you. Especially Sheetal. हाँ, especially. Your friend Sheetal is waiting. Best for friend. फ्रेंड क्या होता है? उस संडे नाम रख दिया था हमारा बेस्ट फ्रेंड. you. Okay. Tell me now. If this is a curve, and that's how the velocity is. Okay, let's say this velocity is increasing. It goes on increasing as the body performs the circular motion. Please tell me the direction of tangential acceleration and centripetal acceleration. So velocity आपने बनाई है ऐसे आप Tangent है. सर tangent ही है ना? हाँ, it is a कहाँ से tangent नहीं है? Mathematically बताइए. सर आप मैथ्स के हिसाब से बस एक पॉइंट में टच करना चाहिए. देखो टच करना है. Okay. Yeah, please draw it in your notebook. Everyone, draw the direction of tangential acceleration and if it centripetal is increasing in that case. and centripetal acceleration if velocity is increasing. Velocity increase कर रही है. ठीक है. बनाइए. Direction of tangential acceleration and centripetal acceleration. कहाँ centripetal कहाँ है? हाँ? magnitude change हो जाएगा. Magnitude. बढ़ती जा रही है और सर्कुलर में है ये बोला ना. हाँ. My dear Dev, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि जब डायरेक्शन चेंज होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन विल बी डेवलप. मैग्नीट्यूड की वजह से डेवलप नहीं हो रही है, डायरेक्शन की वजह से डेवलप हो रही है. इसका मतलब ये कब हुआ कि मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होएगी ही नहीं. मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में? सारी एक्सीलरेशन एक साथ लगती हैं साइमल्टेनियसली. और अगर सर्कुलर पाथ है तो डायरेक्शन तो चेंज होता ही रहेगा. सर्कुलर का एक कर्व है, कर्व में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा. ओके, सो दिस इज वेलोसिटी. सो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन velocity is increasing as mentioned in the question. So tangential acceleration will be parallel to this, yes or no? Yes, sir. And this will be your centripetal acceleration. बोलो बोलो हाँ की ना. Yes, sir. Yes, sir.
Can you tell me the angle between tangential acceleration and centripetal acceleration? 90. Very good. Angle 90. angle between, this is a parallel vector, you know, Yes, and vector can be slided in a parallel way. कोई दिक्कत नहीं है. इसको अगर यहाँ पे ले आए, तो इसे 92. so this is 90. Chirag, yes or no? So note down. Yeah, good Reshma, that AC is always perpendicular to AT. What are you thinking? Got it? Done? Okay. Let's move on. So, I can write that AT is equal to dV by dt. ऐसे लिख सकता हूँ. Can I? Yes, sir. ऐसे. अब सही है. Is it correct? It is wrong. This represents, if I am only writing V, it represents direction also. But tangential acceleration is caused only due to change in magnitude. So magnitude of velocity, change in the magnitude of velocity with respect to time. That's what tangential acceleration is. And what is magnitude of velocity known as? Magnitude of velocity is known as what? Speed. Speed. Magnitude of velocity is speed. What is speed? Speed is velocity without direction. Okay. So can I say that tangential acceleration is change in speed upon time? Bolo, bolo, bolo. So, Yes, change sir. in the speed of a body divided by time is your tangential acceleration. Not tangential. Now what will happen if a body is rotating with constant speed? Yeah, what will happen? Magnitude of V will be constant? Yes or no? Yes. So that means 0. That means tangential acceleration is 0. Yes or no? Yes, sir. By velocity का magnitude speed constant है, speed change नहीं हो रही है. तो स्पीड चेंज नहीं हो रही, डिफरेंशियल का मतलब क्या हुआ? चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल. नाउ स्पीड इज कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग, तो फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू इज सेम. सो चेंज विल बी 0. दैट मींस AT विल बी 0. बोलो बोलो. Yes, sir. तो इसका मतलब अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करेगी तो उस पे एक्सीलरेशन नहीं लगेगा. काजल, फिर कौन सा लगेगा? और भी तो 3 बाकी है ना. तो अभी सेंट्रीपीटल फिर भी लगेगा, हमेशा लगेगा. Whenever body is in circular motion, it will always be subjected to centripetal acceleration. Okay? जो ये कांस्टेंट स्पीड अगर नहीं है तो हर पॉइंट पे AT अलग-अलग होगा. मतलब डिपेंड करता है बट Values पे अलग-अलग होगा. Okay, so here tangential acceleration is 0, but centripetal acceleration will act on body. You can also write down whenever body is subjected to circular motion, then centripetal acceleration will always act on body. It will always be present.
समझिए। Yes, sir. चिराग जी समझ में आ रहा है सब? Okay, one more thing in this. सर एक बार को फॉर्मूला दोबारा समझा दो। dv by dt वाला मैग्नीट्यूड वाला जो नेक्स्ट स्लाइड सर ये वाला ये Yes. क्या ये डेफिनेशन जो मैंने लिखी है वेलोसिटी इज दिस करेक्ट? वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। याद नहीं है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट में तो चेंज हो रहा होगा तभी तो वेलोसिटी होगी, टाइम के साथ हो रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एस लिखते हैं, चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से फिजिक्स में, ये डेल्टा टी हुआ। अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ds by dt लिखेंगे, यस और नो? बाकी ना एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, right? That means delta v by delta t, yes or no? It can be written as dv upon dt in differential form. Okay, as I have told you, velocity is what? It is speed plus magnitude. If the speed has got magnitude, it becomes velocity. The symbol that I have written there, this means mod. That's the short form, it means modulus. Modulus is equal to magnitude. It signifies magnitude. So if I am writing magnitude of V, that means direction is not taken. I have written speed plus magnitude, sorry. This is speed plus direction. So if I am saying magnitude, that means direction is not taken, only numerical value is taken. That's the meaning of magnitude. So magnitude of velocity will be speed. बोलिए हाँ कि ना? ठीक है? If I am saying कि यहाँ पे सिर्फ magnitude की change की वजह से ये acceleration develop हो रहा है, that is why I have written magnitude of velocity. Okay. So AP and AC. Fine. As you can see, they both are making first of all angle of 90 degree forward. As you can see that acceleration called centripetal acceleration, it is acting normal to the curve. Curve में देखिए हमेशा अंदर की तरफ normal है, तो इसको people also call it normal acceleration. And tangential acceleration parallel होता है, it is known as, because this type of acceleration, centripetal acceleration is normal to the direction of motion. Motion के हमेशा normal होता है ये. भाई velocity किधर होगी? इधर ही तो होगी. Velocity की normal है कि नहीं है? That is why it is known as normal acceleration. And AT क्या है? Velocity के parallel. या तो एंटी पैरेलल होगा या पैरेलल होगा, लेकिन है तो पैरेलल, yes or no? So that is why it is known as parallel acceleration. So if in a question paper you see parallel acceleration, anti-parallel acceleration, oh sorry,
Normal. Yeah, anti-parallel is also right. Parallel, anti-parallel, normal. So don't get confused. They are talking about AT and AC. Understood? Do note it. Done. Shocking. Shocking. आंसर हो गया भाविका, शॉकिंग गायत्री, मनाल. शॉकिंग दुखी लग रही है पूछो क्या बोल Shocking, are you sad today? सर आज कॉलेज की क्लास नहीं हुई एक दिन तो क्लास बढ़िया होती है Maths? नहीं सर बायो की नहीं Okay, bio class. Okay. क्या तुम इतने उदास होते हो जो फिजिक्स की नहीं होती? शॉकिंग? नो सर आज से मैं और तुम दोस्त नहीं रहे. Okay, moving on. Next is net acceleration. Shocking is like एक ही तो सब्जेक्ट आता है उसकी क्लास नहीं हो रही है. हाँ, net acceleration. What is the meaning of net? Total. If here we are talking about net acceleration, so what two accelerations we have seen on a body? If here is the body, so here AC is acting, here AT is acting. Yes or no? Yes sir. So total acceleration will be what? Or net acceleration will be what? इन दोनों का total. कैसे निकालें इनका total गौरांश? How to find out their total or net? सर उनका रिजल्ट निकालना Yes, चिराग. कैसे? उससे क्या आता है? Resultant का क्या आता है? मैग्नीट्यूड आता है. गुड. डायरेक्शन क्या होगा इसका वैसे? इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? किस तरफ होगा डायरेक्शन? 45 डिग्री होगा. गुड गुड गुड. 45 डिग्री? कैसे पता? क्या AT और AC इक्वल है? If vectors are equal, तब 45 बनता है. एंगल इक्वली डिवाइड होता है. थीटा नहीं अल्फा बोल देंगे. Anyway, खैर. So my dear, we all know that AT and AC are perpendicular to each other. Yes or no? मैडम ये वेक्टर्स हैं. ठीक है. और वेक्टर्स का नेट निकालने के लिए वेक्टर सम लगाना पड़ता है. रूल्स पढ़े थे? Triangle law of vector addition. So when vectors are perpendicular, this will be their sum. This will be the net. A net. बोलो बोलो. Yes sir. ठीक है. जल्दी से जल्दी go through the lectures and if you are facing any doubt, please ask me. So ये vectors की हम लोग बात कर रहे हैं. इतना तो आइडिया होगा ही. 11th पढ़ा था. हाँ सर Your differentiation and integration is fine or not? Clear है ना? And vectors? Vectors तो clear है. So this will be A net. Yes or no? Guys, you are not responding. And I get irritated when you don't respond. Sure. yes sir So this is A net. Now, what will be the magnitude of A net? Magnitude of A net? sir root AC squared plus AC squared What about आगे का term? हाँ. वो तो जीरो जाएगा फोर साइड Plus 2A AC 80 cos 90. Yes or no? Cos 90 is how much Gauranshi? 0. So ये पूरा term 0. So magnitude of A net will be under the root of AC square this is your net acceleration.
सर Yes. सर अगर सर कोई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं होगा तो सर ए नेट तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही बन जाएगा. Yeah. Okay, come here. So A net is defined as magnitude of dv by dt. Okay. A net is magnitude of change in the acceleration of velocity upon time. Okay. And as you can see, अगर मैं यहाँ पे velocity की बात करूँ, if I talk about velocity, so this will be the direction of velocity. So direction of A net and velocity is not same. People do this mistake in numericals. वो A net और velocity का direction same ले लेते हैं. ठीक है? पहले तो इतना मालूम ही नहीं होता कितना acceleration होता है. अगर कहीं से लाइट जल भी जाती है, तो वो same direction ले लेते हैं. It is not same. You can see velocity ऐसे जा रही है, इसका direction अलग है. So write down that direction of A net and V is not same. और इसको आप ब्लॉक में कर लीजिए, आपको आगे याद रहेगा. इसको अलग बना लेते हैं. We found out the magnitude, but acceleration is a vector quantity, so it has got direction also. तो कुछ एंगल होगा, यहाँ से कुछ एंगल ले लो, क्या ले लो, अल्फा ले लो, अल्फा, कुछ और बोल लो, गामा ले लो. So this is what? AC is a vector. It can be slided in a parallel fashion. तो इसको यहाँ पे आ जाएगा ऐसे. AC. अब एक ट्रायंगल बन गया. वेक्टर को पैरेलली स्लाइड कर सकते हैं अगर डायरेक्शन ना चेंज किया जाए तो कोई अंतर नहीं आता. मतलब अगर यहाँ पे कोई वेक्टर है A, तो इसको तुम उठा के यहाँ ले आओ, वैसे ही डायरेक्शन मत चेंज करना. जिसका हेड है वो डायरेक्शन बताता है, तो कोई अंतर नहीं है, सेम चीज. ओके. So this is AC now. Tell me. अब इस ट्रायंगल को देखिए. Look at this triangle. Okay. So if I need to find the direction, I can do it with the help of angle. We already know that angles give the direction. So tan ले लो इसका. Tan gamma कितना? What will be tan gamma? अगर मैं इस एंगल का tan लूँ तो क्या आएगा? अरे उधर देखो, मुझे नहीं. ट्रायंगल देखिए, बताइए tan क्या आएगा? tan का फॉर्मूला क्या होता है? AC upon UT. आप बताओ. You don't know formula for tan? Okay. Look here, dear. कोई बात नहीं होता है. Have. This is have. My writing is also awesome. So based upon height. पर P permanently black, इसको याद कर लीजिएगा, हमने 8th में किया था. ठीक है. Some people have curly brown hair, tan, permanently black. S some. This is sin. Theta. P means perpendicular.
H is hypotenuse, ठीक है, और B बेस होता है, ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस. If this is the triangle, ठीक है, तो जहाँ पे एंगल होता है वहाँ पे जाके आप बैठ जाइए, go there and sit. आपको सामने जो लंबी सी लाइन दिखती है वो परपेंडिकुलर होता है, this is perpendicular. आप बैठेंगे तो किसी चीज के ऊपर बैठेंगे तो ये जो है ना ये बेस हो गया, और जो तीसरी साइड बची हाइपोटेन्यूज, उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है. अब बताओ यहाँ पर हो तो परपेंडिकुलर क्या होगा, एक मिनट नाम दे रहे हैं, A B C. What will be perpendicular? AC. What will be base? BC. Hypotenuse क्या होगा? AB. Very good. ठीक है, अब यहाँ पर आओ, अब यहाँ पे बैठो, बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा. tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan परमानेंटली ब्लैक, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब बताओ यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा, इधर देखो ना, हाँ बताओ. उसके सामने वाली AC. AC, वेरी गुड. बेस क्या होगा? AB. वेरी गुड. ओके, ठीक है, नहीं अच्छा है, जो ना है पूछना चाहिए. So that will give you the direction. Okay, everyone. Yes, sir. Please note it. Understood, everyone? Online, why are you guys so silent? What has happened to you? Are you sleeping? मैं तो रोज बोलता हूँ बाकी बच्चों के माइक ऑन करवाओ. Okay. Yeah, Pujita, you are silent nowadays. Are you fine, dear? Gayatri, huh? Okay, so moving on to questions. Questions. The fourth one. हाँ जी, Fourth one. क्या कह रहे हैं? तो एक्सीलरेशन करवा दो पहले. पैरेलल वो एक्सीलरेशन. कह रहे अच्छा. Thanks for your suggestion. I will keep it in mind. So if V is equal to 2t, R is equal to 9 meters, then find AC, AT, ANet at t equals to 3 seconds. Okay, you went for a trip, Pujita. Go through the classes that you have missed, Pujita. Okay, this chapter is started fresh, so I don't think there will be any problem in this chapter. But the previous work per energy, if I remember correctly, you have missed few classes there. So go through the recording, okay, dear? And if you face any problem, feel free to ask. So 4 to under 20. हाँ जी, 4 to ओके, हाँ जी. अल्फा बताइए ना मैडम. Alpha और ये एक्सीलरेशन निकालना है तो अल्फा नहीं निकालेंगे. Without direction, how will it be acceleration? Yes, you got it. I'll keep on going here and just standing. ये 6 कैसे आया? नहीं, ये कैसे आया? So you have tried, not here, ये गलत approach है. Velocity 2t है, that means it is, look here, it is changing with time. तो आप उसकी constant value निकाल लो particular second पे. आप तो 3 सेकंड पे वैल्यू बता रहे हो ना कि कितनी होगी. सर जो चीज़ को खेला गया है वो
नहीं रखना है। हाँ, इसमें अभी नहीं रखना है। क्यों रखोगे? इसका 2t का मतलब क्या हुआ कि जैसे जब टाइम तुम्हारा 1 सेकेंड है तब वेलोसिटी हो गई 2 मीटर्स पर सेकेंड, जब टाइम 2 सेकेंड है तब वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, जब टाइम 3 सेकेंड है वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। यानी टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। बोलो हाँ कि ना? तो अगर तुम रखोगे तो तुम 3rd सेकेंड पे ही तो बता रहे हो वेलोसिटी, वो तो पूरे मोशन की वेलोसिटी दे रखी है। हाँ हाँ, ये मत पूछना करो, चले चले सर ए नेट क्या है? अंडर 20 जी। तो फिर आपने मुझसे क्या निकालने को बोला? इसका डायरेक्शन क्या है ए नेट का? हाँ, Then, यस the centripetal acceleration is 4, tangential acceleration is 18, and क्या? wait one by one centripetal acceleration is what? 4. 4. हाँ, सही तो। अच्छा, या ठीक है। रेशमा, you are getting 324. What has happened to you? F of गलत लिख tan दिया। inverse 2. हाँ, and what is tangential? What is tangential? 18. Wrong. Sir, it's 18 only. Tangential acceleration is 18. अरे क्या, कैसे 18 आया? मुझे दिखाओ किस हिसाब से। अरे 2 आया ना, 18 कहाँ से हो गया? 2t को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के स्पेस में। क्या आप कर रहे हैं? लुक हियर, AC is equal to V square by R. Yes. So 4t square upon R 81. R is a खाली. Sorry, yeah. 9. 4 into how much is time? 3 seconds. Upon 9. 9 gone. 4 meters per second square. Now talk about 80. 80 is you have to differentiate speed with respect to time. Speed is how much? It is 2t. So d by dt of 2t. 2 is the constant, it will come out. Differentiation of t with respect to t will be 1. So 2. That's what your tangential acceleration is. Getting it? हाँ, ये किया. Okay. Now what we need to find? A net. A net is equal to under the root of AC square plus AT square. That is 4 square plus 2 square under root 20 meters per second square. What else? Direction. So tan gamma is equal to AC by 80. 4 by 2. So gamma is equal to tan inverse 2. That's the direction of A net. How were you getting 18? I don't understand. What were you doing? काजल, समझ रही हैं? Got it? Chila. Everyone clear? Note it fast. Yes, I done. Done, sir. So क्या किया आप लोगों ने इतनी देर? सर पढ़ाई कर रहे थे। हाँ. That's good. See? Chemistry or physics. Good utilization of your time. Nikita. If omega is equal to 2t and r is equal to 2 meters, then again find AC, AT, A net at 3 seconds. Same है omega.
आ रहा हूँ ये स्क्वायर देखो tan गामा is equal to 2 अब देखो जब इसको इधर ले लेंगे गामा इधर चाहिए इधर ट्रिग्नोमेट्री तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को इधर चाहिए AC क्या है t square by 2 सॉरी चिराग आंसर AC बताइए सर 72 72 हाँ कितना बता रहे थे AC मेरा गलत है 2 by मेरा सुना नहीं आपने कितना बोला t square by 2 80 स्क्वायर 8 AC अरे AC की वैल्यू तो पूछ रहा हूँ कितनी आ रही है 72 नहीं यार 72 72 मीटर पर सेकंड हाँ निकाल लो जितना भी आ रहा है या 72 आएगा सर 84 भी 84 या 84 A net 20 to 30 ये नेट कितना 20 to 30 क्या है 84 है या जो भी हो कर लो इतना मैंने नहीं किया तुमने क्या कर दिया मैडम हाँ मैं मेरे को पता नहीं ओमेगा दे रखा है मैंने उसका Here omega is given, so first find out V. Omega और V में क्या रिलेशन होता है? V जीरो? ओमेगा और V में क्या तुमने रिवाइज नहीं किया करके कॉन्सेप्ट डेली पढ़ा करो, ठीक है? देखो क्या रिलेशन होता है? Okay, I am doing. V is equal to R omega, yes or no? Yes sir. Omega is given to you. Yes sir. R is given, you can find out V. V will be what? 12 2T into 2, that is 4T. Bolo. Yes or no? Now we need to find AC. AC will be V square by R. That is 16T square and R is 2. 2 ones are 2 8s are. That is 8T square. Now substitute the value of T. So 8.3 square, that is 9. So 72 meters per second square. That's AC. 80. 80 is equal to, you have to differentiate the magnitude of velocity with respect to time. What is your velocity? It is 40. So 4 is a constant, it will come outside the differentiation. You have to differentiate t with respect to t. So it will be 4 meters per second square. Then A net. A net is under the root of AC square plus 80 square. What is AC? AC is 72 square plus 4 square. Not do that, I am not that stupid. Do solve it. Now kar lena. Root 5200 20 That was very easy. Pay attention now. Do one question in the same question. You have noted it, na? Yes sir. So the next question is all the values of this question. You have to keep all the values of this question, and then your question is find the time. Find the time Find the time when 80, that is your tangential acceleration. Find the time when 80 makes an angle of 37 degree. Find the time when 80 makes an angle of 37 degree with A net. You have not noted the question, you both, huh? बताओ क्या कहा मैंने? Find the time
लिखो सारी वैल्यू सेम है पुराने जैसे दिशा एंड निकिता, ओके। बस नई चीज क्या करनी है, फाइंड द टाइम व्हेन 80 टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद ए नेट। ठीक है, 80 और ए नेट के बीच का एंगल 37 डिग्री हो जाए, किस टाइम पे होगा वो टाइम निकाल के बताइए। उस वाले क्वेश्चन में 84 के साथ हाँ 4 है ना, एक बार बताओ। डिफरेंशिएट करोगे ना 40 का 4 कांस्टेंट और मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ, 4 बाहर आ जाएगा, तो d by dt of t। अच्छा अगर मैं जो v है 40 आ रहा है, अगर उसमें वहीं पे 3 डाल दूं तो तुम जो है वेलोसिटी की वैल्यू थर्ड सेकंड पे निकाल रहे हो। अच्छा तो गलत है। वो तो तुम वेलोसिटी की वैल्यू तीसरे सेकंड पे निकाल रहे हो। क्या दे रखी है तुम्हें वेलोसिटी 40 दे रखी है, यानी कि पहले सेकंड में वेलोसिटी होगी 4 मीटर्स पर सेकंड, दूसरे पे होगी 8, तीसरे पे होगी 12। वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है, तुम तो एक पर्टिकुलर सेकंड पे निकाल रहे हो, ओवरऑल कहां निकाल रहे हो। तो मैं वैल्यू नहीं डालूं। वैल्यू कैसे डाल सकते हो, टाइम वेरिंग वेलोसिटी है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, मेरा फोन आया बट मैंने वहां वैल्यू लिखा है वो गलत है ना। Yes, what is the answer? Sir, it's coming root 2 upon 3. हाँ जी, कितना सुरभि? 72 पर Sir, root 2 upon 3. Wrong. Good. सही है। Yeah. Okay, please see, I am doing it. So t is equal to root 3 upon Root 3 upon 8. Please see, in this question, this is your AC. This is AT. Huh? Yes, sir. This is A net. Now it is saying A net is making an angle of 37 degree with 80. So इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? Tan 37 is equal to AC by 80. AC की वैल्यू आप निकाल चुके थे पिछले क्वेश्चन में, कितनी है? What's the value of AC? 8t square. 72 सर 72 है। हाँ 72 ले लो, दोनों हो गए। 8t square ले लो, मैं वैल्यूज आखिरी में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, आप लोग पहले करते हो। 72, what is 80? So तो 84 आएगा, 4 था, 84 था। ओके, यही आप लोगों ने गड़बड़ कर दी। ओके, निकालना है ना। सी हम लोग को टाइम की वैल्यू निकालनी है जब ये एंगल 37 बन रहा हो, तो आप AC की वैल्यू 72 सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने t की वैल्यू 3 रखी है। दैट इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एट टाइम इक्वल्स टू 3 सेकंड्स। ये आप लोगों ने मिस्टेक करी है। हम लोगों को टाइम की वैल्यू वो निकालनी है जब एंगल 37 डिग्री हो जाए। यस और नो? जब एंगल 37 डिग्री हो जाए, सो एंगल 37 डिग्री हो जाए, इसलिए हम लोग उसको ओरिजिनल फॉर्म में रखेंगे 8t स्क्वायर। 80 वाज हाउ मच? 4। समझ में आई बात कि नहीं? हमने t इक्वल टू 3 क्यों नहीं रखा? वो तो आप थर्ड सेकंड पे निकाल रहे हो। हमें वो वैल्यू चाहिए जब आपका AC 37 डिग्री का एंगल बनाए 8t के साथ, तो AC की वैल्यू 8t स्क्वायर थी।
तुमने तीसरे सेकंड पे उस 8t स्क्वायर में ही आपने 3 रखा था, तभी 72 आया था प्रियंका। हाँ, तो 8t स्क्वायर, तो इट विल बी 2t स्क्वायर। tan 37, अब मुझसे पढ़ते पढ़ते इतना तो आप लोगों को आ ही गया होगा। 37 डिग्री वाला ट्रायंगल, 3 4 5 perpendicular upon base, so 3/4 is equal to 2t square, so t square is 3/8, so t is under root 3/8. Got it? Yes, sir. Okay, so thank you for your patience. Yes, sir. Thank For you, listening sir. to me with so much love. Bye bye. I'll see you tomorrow. Thank you, sir. Take Thank you, care. sir.